Good morning, everyone. So, our today's topic is about measurement of radioactivity. Means, how can we measure the radioactivity? Then there are some techniques which can be used for the measurement of radioactivity. What are they? Ionization chamber, proportional counter, scintillation counter, and Jaeger-Muller counter. So these four techniques are used for the measurement of radioactivity. So it may come in your 2 to 4 marks question. So what is ionization chamber? Ionization means the formation of electrons and protons or ions. So it these are of various types and size are available. A chamber इस chamber में filled with the gas से fill होता है and fitted with the two electrodes. So what are those? Cathode and anode kept at different electrical potential. So potential difference should be maintained between those electrodes. Then it is connected to a measuring instrument to flow of electric current. So करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है. देन रेडिएशन एंटर्स थ्रू द विंडो के थ्रू रेडिएशन एंटर करता है. देन इट कॉजेज द आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और आयंस विच रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जब गैस मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन होता है देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स. दिस सो चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल करंट विच इज produced. So this is how our ionization chamber works. Next one is our proportional counter. So the proportional counter is a type of gaseous ionization detector which is used to particles of ionizing radiation, used to measure particles of ionizing radiation. Then our scintillation counter, it is an instrument for detecting and measuring ionizing radiation by using excitation coefficient. So excitation effect of incident radiation. So on a scintillating material and detecting the resultant light pulses. So light pulses को डिटेक्ट करता है बाय जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है ऑन स्किंटिलेटिंग मटेरियल के ऊपर. सो दिस थ्री आर जस्ट जनरल टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन आवर topic of measurement of radioactivity. So just go through this. Then GM counter or Jaeger-Muller counter, its principle, it is used to detecting and measurement of radiation. Means detect and measurement करने के लिए radiations को what we use, radiation such as alpha, beta, gamma is to be measured on GM counter. It consists of pair of electrode with high voltage running between them. Then radiation entering tube, जो भी रेडिएशन एंटर होता है दिस ट्यूब के थ्रू, दैट आयोनाइजेस द गैसेस एंड फॉर्म्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दैट आर अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रोड्स. दो इलेक्ट्रोड्स है उसमें अट्रैक्ट होता है एंड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज इट्स प्रिंसिपल हाउ इट वर्क्स. देन द कंस्ट्रक्शन इट कम्स. GM काउंटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैथोड. सो दिस इज योर सिलिंड्रिकल कैथोड जो ट्यूब है which is of 1 to 2 centimeter diameter. Means it is about 1 to 2 centimeter diameter के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन होता है. along the center of which is a wire anode. So this is your wire anode and the outermost wall is your cathode. Then the space is filled with the inert gas like helium, neon, argon is used. space के अंदर this space के अंदर gases होता है like helium, neon and argon. The window has been made up of mica or aluminium alloy for counting radioactive sources. So left इधर जो ओपनिंग है इसे विंडो कहते हैं जो कि मिका या फिर एल्यूमिनियम एलॉय के थ्रू मतलब कंस्ट्रक्ट होता है जो कि मेड अप ऑफ मिका फॉर काउंटिंग रेडियोएक्टिव सोर्सेस लाइक रेडिएशंस could be counted. Then the operation, the tube consists of two electrodes between which the high potential difference would be created. Then next comes to your the wall of the tube. The wall of the tube consists of two electrodes. So the electrodes are cathode and anode, two electrodes between which there is a potential difference of several hundred volts to be maintained, जो कि वोल्ट डिफरेंस होता है जिसके वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है बिटवीन कैथोड एंड एनोड. तो टू इलेक्ट्रोड के थ्रू कंसिस्ट होता है. Then wall of tube is either metal. So the wall of tube either metal के थ्रू कैथोड को बनाया जाता है और inside with conductor to form cathode. Okay. Then while anode, this anode is the wire
in the center of the chamber. So this is your operation where when ionizing radiations, this ionizing radiations strike to the tube, means this strike to the tube, then क्या होता है, some gaseous molecules are ionized. So gaseous molecules become ionized either directly by incident of radiation, radiation का incident होने से, या फिर indirectly by formation of electrons, like what electrons may be produced either directly by incidentation of radiation or produces electrons in wall of the tube. So दो के वजह से गैस मॉलिक्यूल्स जब इंसिडेंट होते हैं उसके बाद क्या होता है, उनका आयन्स फॉर्मेशन होता है. दिस इट क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो आयन्स फॉर्मेशन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स विल बी फॉर्म्ड. सो नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे, नोन एज आयन पेयर्स. जो भी गैस मॉलिक्यूल टूटता है उसके बाद फॉर्मेशन होता है आयन पेयर्स, मीन्स पॉजिटिव चार्ज्ड ions and electrons are formed. Then what we give, strong electric field accelerates the positive ions towards the cathode. Positive ions जो भी है कैथोड के पास आएंगे, और जो भी negative ions like electrons towards the anode. So the pulse of current passes from negative electrode to the positive electrodes, which is measured and counted. So इसका काम है measure करना and count करना, GM counted का. So वो measure करता है and count करता है. So this type of GM tube, it also known as N type of window, N type window or N window type, named as the tube has a window at one end. is इसका एक window है, जो मैं बोली थी इधर window है. So this is why it is called as N window type, and through which, इसके थ्रू क्या होता है, the ionizing radiations can easily penetrate, and other end has its electrical connectors as you see in this figure. Okay, so this much is total of your GM counter.